So let's just run this program, and here you go. So you can see that after running this program, the distance actually has reduced by a unit. 8 जो था वो 7 हो गया और 9 जो था वो 8 हो गया. So this is a sort of overloading that has been done in this particular case, right? The overloading that has been done in this particular case. Let's see कि अगर मैं वही बाइनरी ओवरलोडिंग करता हूँ, दैट मीन्स कि मैं रिड्यूस करता हूँ दो प्राइमरीली मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस केस के अंदर if I want to like जो reduced version है of the distance, वो मैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ और फिर उसको रिटर्न करना चाह रहा हूँ एज अ थर्ड ऑब्जेक्ट. तो 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ. तो मतलब ये है कि इफ़ आई हैव another object saying D2, right? So what I want is कि D2 minus D1 जो है वो क्या करे, D2 minus D1 जो है वो ये करे कि D2 में D1 की रिड्यूस्ड वर्जन जो है वो स्टोर हो जाए, राइट? और फिर वो जो वैल्यू है D2 की वो एक थर्ड ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए, ठीक है? सो इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे पास जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस केस में अप्लाई होगा, ठीक है? सो दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल. आई मीन आई हैव जस्ट टेकन दिस एग्जांपल जस्ट टू इलस्ट्रेट कि आपका जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला जो फंक्शन है वो आप कैसे चेंज होगा. तो अब हमारे पास एक रिटर्न टाइप है. तो लेट्स से कि मैं करना कैसे, तो मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, राइट? सो इस तरह की. तो D2 माइनस D1 जब मैं करूँ तो D2 में D1 की रिड्यूस्ड फॉर्म स्टोर हो जाए, राइट? और फिर जो D2 की जो स्टोर्ड फॉर्म है, D2 जो है वो फिर D3 में स्टोर हो और D3 फिर रिटर्न हो मेरे फंक्शन के थ्रू, ठीक है? तो इस केस में मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे करनी है, I'll have to change the program. और so remember this is what I want to do, ठीक है? I could do it the other way also. मैं D2 equals D2 को असाइन कर सकता हूँ, माइनस D1 भी कर सकता हूँ, लेकिन I just wanted to make it a simple illustrative example कि अगर आपने कुछ इस तरह से ऑपरेशन करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं. आप D2 you can assign the value of D2 to D2 directly by writing this sort of a वो भी आप कर सकते हैं, but I'll leave that part as an exercise for you. लेकिन I've just made it a little bit more complex just for illustrative purposes. There is no specific reason or specific advantage for this. So अब distance जो मेरे पास overloading operation है या जो function है वो अब ये form इख्तियार करेगा, distance operator minus and now there is an argument here. So distance ampersand x. So we are expecting an argument here. और so यहाँ पे एक invoking function, invoking object आएगा और एक argument object आएगा. So if I look at this particular statement here, तो D2 minus D1 में invoking object D2 है और argument के तौर पे D1 इसमें enter किया जा रहा है. So what I want from D2 minus D1 is कि D1 की reduced form जो है वो D2 में store हो जाए. दोनों के distances को subtract करना मकसद नहीं है,
ठीक है. So for that case what I'll do is कि I'll first do this. I'll use this operator and this pointer, और ये this pointer है जो कि I can actually use this, right? So this feet and this inch is assigned a value of x dot feet minus 1 and x dot inch minus 1. So एक वैल्यू उसकी रिड्यूस हो गई है और वो दिस में दिस पॉइंटर में चली गई, एंड यू नो दिस पॉइंटर कौन सा होगा. इस केस में दिस पॉइंटर वुड रिफर टू D2. ठीक है. तो ये तो ऑपरेशन हो गया जो कि D2 माइनस D1 तक है. ठीक है. एंड यू कैन रन दिस प्रोग्राम. नेक्स्ट व्हाट आई वांट इज कि ये जो वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू D2 में मेरे पास आई है वो एक थर्ड ऑब्जेक्ट में भी स्टोर हो जाए. तो D1 की वैल्यू रिड्यूस हो, पहले D2 में हो और फिर D3 में हो. ठीक है. तो इसके लिए I can actually write down this part of the code. So y dot feet को equate कर दिया this feet के साथ, तो this feet would refer to the invoking object. लेकिन यहाँ पे एक नया object मैंने create कर दिया which would refer to the returning object of this function. और वो returning object of this function जो है ना उसको मैंने y से कर दिया, लेकिन y को मैंने declare नहीं किया. तो within this program I'll have to declare and initialize y. So I'll do it here. So distance y, I've declared it, and now this actually makes sense. और फिर मैं वैल्यू को प्रिंट भी करवा देता हूँ. ठीक है. और वैल्यू को फिर मैं रिटर्न भी करवा देता हूँ. ठीक है. तो here I'll print the value and then return the value y. Right. So this completes our function, the overwriting function, the overloading function जो हमने लिखना था. Declaration में if you recall, तो यहाँ पे हमारे पास अब 3 instances हैं of distance. So we'll just initialize these 3 instances, D1, D2 and D3. So what should be the value of D2? D2 की वैल्यू जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ने दी है वो 3 और 3 है, यानी 3 फीट 3 इंचेस. लेकिन आफ्टर दिस क्या होना चाहिए? D2 की वैल्यू जो है ना वो 7-8 आनी चाहिए, 7 फीट 8 इंचेस. और यही वैल्यू जो है वो D3 में आपके पास जो है वो स्टोर हो जानी चाहिए. ठीक है. So let's just run this program and see if it works or not. ठीक है जी. So let's just run this program and see if it works or not in this case. Right. So let me just execute this. Okay. So you can see that what has happened in this particular case. Right. Okay. So now you can see the outcome of this particular program. So after applying minus D1
what has happened? The distance has reduced from, so the initialization was 8 and 9, so 8 feet 9 inches. So minus d1 will reduce it by 1, so you will get an output which is the reduced output, which is primarily the first overloaded function, the application of the first operator overloading function, which is this one, right? तो इसकी उसने क्या किया, इसने इसको reduce कर दिया by 1, ठीक है. So it has been reduced by 1. So now the new value will be 7 feet 8 inches. और फिर हमने क्या किया कि we have further reduced it by applying this operator. तो -d1 दोबारा से अप्लाई किया, तो अब -d1 जब दोबारा अप्लाई किया तो this has reduced it 7 feet 8 inches को further reduce कर दिया by 1. So now the new value in d1 will be 6 feet and 7 inches, और ये वैल्यू d2 में स्टोर हो रही है, और फिर ये वैल्यू d3 में स्टोर हो रही है, और d3 को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, राइट. d3 को यहाँ पे प्रिंट हम करवा रहे हैं. So this is what the operator overloading will do. Let's say कि मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, तो जब इसको मैं ब्लॉक करूँगा तो now what should happen is कि 6 feet 7 inch ये नहीं होना चाहिए, ये डबल रिडक्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिंगल रिडक्शन के साथ ये चलना चाहिए. So both the answers would be the same. अब इस केस के अंदर the first function which is this function is not being applied. In fact ये वाला फंक्शन सिर्फ अप्लाई हो रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला, और उसकी वजह से इसकी रिडक्शन जो है ना वो by 1 हो रही है. So 8 feet 9 inches जो है now it has reduced to 7 feet 8 inches, और D2 में वो वैल्यू गई है और फिर D3 में वो वैल्यू गई, ठीक है. So I hope this clarifies the problem and the concept of operator overloading. I hope the video will be useful for you to understand this concept. If you have any questions, you can always contact me, and you can always discuss this with me in this case. So this is just an illustrative example. I hope this would help you. Thank you.